नमस्कार दोस्तों, आरके डिजिटल स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेटा स्ट्रक्चर में हमने लिस्ट देखा था, कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हम लिस्ट को कैसे ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नो अबाउट द लिस्ट इज म्यूटेबल, मीनिंग यू कैन चेंज द लिस्ट। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। Changing elements. Changing elements. Numbers is equal to a square bracket 10, 20 and 30. Okay. So 0, 1 and 2. We have a 3 index 0, 1, 2. 0 पे है 10 and 2, 1 पे है 20 and 2 पे है 30. हम इसको मॉडिफाई करते हैं अभी। नंबर्स, ओके, और इंडेक्स 1 पे है 20, मैं इसको ना 25 इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, लेट्स प्रिंट द आउटपुट आएगा 10, 25 एंड 30। तो 20 रिप्लेस हो गया 25 से। अब हम देखने वाले हैं कैसे हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट इन द लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट। यूजिंग append method you can add the element at the end of the list. Okay, so I will just add some values in existing list. Numbers dot append 40, numbers dot append dot append 50, will go for till 70. Numbers dot append 60 and numbers dot append 70. ठीक है, now we'll print the numbers. Let's see the example. So original are 10, 25 and 30. Okay, now I modify and added the at the end of the list 20, 50, 60 and 70. You can also remove the element from the list. So you can also remove element from the list. How we can remove the element from the list? Using remove method you can remove the data from the list. Let's see the example. The numbers dot remove, okay, 25. Let's print the number. See, 25 यहाँ से डिलीट हो गया, 40, 30, 30, 40, 50. Okay, now I just want to remove the element based on the index. Print, okay, numbers, and I'm printing the value on the index 2. 0, 1, 2. Let's see. Sorry, I printed this one. I have to remove this values. Numbers dot remove based on the indexing. Now I have to print the number. See, 0, 1, 2. 40 is the based on the index I just deleted. Now 10, 30 and 14, 16. Thanks for watching this video. Bye bye. See you in the next lecture.